इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग based on the Sanger's method, and this method is going to be called as cycle sequencing method. इस नाम की वजह बेसिकली जो इक्विपमेंट जो हम यूज करेंगे इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज पीसीआर. So amplification or the strand synthesis is going to be done using the PCR in a cyclic fashion. Therefore, this method is called as cycle method. It is also known as the thermal cycle DNA sequencing or linear amplification DNA sequencing because of amplification of the linear strands and the accumulation of the radio labeled strands in a linear fashion. इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या कि पीसीआर का जो कन्वेंशनल पीसीआर का प्रिंसिपल है दैट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर सेपरेटेड and primer is used to make another strand, and wherever the dideoxynucleotide is incorporated in the newly synthesized strand, the further extension of that particular strand is going to be stopped. Like other variants of Sanger's method, in this method we are going to perform 4 separate reactions. उसी तरह से 4 डिफरेंट ट्यूब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी और उनको लेबल किया जाएगा ए, जी, सी एंड टी ट्यूब्स, एंड देन ईच ऑफ द ट्यूब विल कंटेन द टेम्पलेट, oligonucleotide primer and a different chain terminating DDNTP like DDATP, dideoxy ATP or dideoxy CTP extra. अब इस मेथड साइक्लिक मेथड को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं. वी कैन परफॉर्म देम इन द फैशन ऑफ पॉलीमराइजेशन और वी कैन परफॉर्म दिस मेथड इन बाय चेज मेथड और चेज प्रोग्राम. पहला मेथड है पॉलीमराइजेशन मेथड. इन दैट केस वी आर गोइंग टू रिपीट द साइकिल फॉर 15 up to 40 cycles in a conventional PCR machine. Means every time we are going to repeat the same 3 steps जिसकी अभी हम बात करेंगे. पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन का. कन्वेंशनल पीसीआर में टेम्पलेट स्ट्रैंड is going to be made available after denaturation of the double stranded DNA. उसके बाद हमारे पास उसी ट्यूब में उसी रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है रेडियो लेबल्ड प्राइमर which can be labeled with P32. That is going to be annealed with the template DNA. Once the primer is annealed with the template DNA, then in the presence of a thermostable DNA polymerase, that primer is going to be extended by utilizing the DNTPs and anywhere random incorporation of DDNTP. Wherever that DDNTP is incorporated, further extension is not going to happen. In the second round, what we are going to do, again the denaturation step comes. पहला cycle complete हुआ. दूसरे cycle में we are going back to denaturation step. The 2 strands are going to be separated. अब इन 2 strands में अगर आप देखिए, we have one parental strand like I show it here. This one was the parental or template strand. Then we started preparing. This is our primer which is annealed with the template strand, and for the time of extension this particular strand has been extended, and here there is incorporation, for example DDATP. Further extension is not going to happen. जब second round में हम आएंगे, we are going to have this particular strand separated and parental template strand separated. Now this parental template strand is again available for primer annealing and extension, and cycle after cycle these kinds of
strands which are radio labeled at this end, they are going to be accumulated in the tube and then these are going to be sequenced later on. और दूसरी तीसरे चौथे पांचवें साइकिल में इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपके पास जो DDATP है वो यहीं पे इनकॉर्पोरेट होगा. देयर इज़ लाइकली ए पॉसिबिलिटी कि इनकॉर्पोरेशन यहाँ तक हो और आपका जो स्ट्रैंड है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रीमेच्योरली टर्मिनेटेड. By gradual increase in number of radioactively labeled strands which vary in length. Later on we go to the sequencing gel and we sequence the 4 different reactions and we find out the arrangement of nucleotide on the DNA. अब दूसरा प्रोग्राम क्या है that the annealing step is omitted. अब annealing नहीं करेंगे उसमें बल्कि उसमें वो होगा जिसको हम कहेंगे चेज रिएक्शन. वी हैव अ चेज कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू चेज नॉन DDNTP terminated segments. That means wherever DDNTP is incorporated in the strand, chain extension is terminated. बाकी प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जाएगा. Instead of going towards the denaturation or annealing, we are going to chase the non-terminated strands and we are going to extend them further until unless there is incorporation of DDNTP. These radio labeled DNA fragments, they are going to be sequenced by using the sequencing gel, polyacrylamide gel electrophoresis, and we can detect the bands by autoradiography.